Well, representatives of all faiths, in fact, spoke after their meeting, their interaction with the Prime Minister in the Parliament as well. Let's quickly listen into that detailed reaction. हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, हम सबको मिलकर इस भारत को आगे लेके जाना है। आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो हमें सबको मिलकर चाहिए कि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब मिलकर एक भारतीय बने। इसी का पैगाम हम सबको देना है, यही हमारा पैगाम है कि हम सब भारतीय हैं। असल हमारा सब एक भारतीय होने का ये संदेश है। आज हम यहाँ पर पार्लियामेंट में जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, यही पैगाम हमको देना था कि हमारे सबके जो पैगाम है, आज का ये बदलता भारत है। इस बदलते भारत की इस नए संसद में ये तस्वीर है, तो इसीलिए हमको आज का जो भारत है, बदलता भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। Shivani, my colleague, joins us with more. The biggest endorsement, if I may put it that way, Shivani, of Prime Minister Sabka Saath message, and a direct response to those, who spoke of their faith, in fact, tried to represent their entire community in saying that they continue to live under fear like Jews were living under the rule of Hitler. Christine, this is not only the biggest endorsement of Sabka Saath, Sabka Vikas, but also a strongest rebuttal to the narrative of communalism that's being set up by some opposition parties with fear-mongering, their statements that are coming in right before the Pran Pratishtha and also after the Pran Pratishtha. So when these leaders of different communities, different religions were in the parliament of India, because Indian culture, Indian beauty is unity in diversity, and that's what these reactions are also strongly depicting, that come what may, politics will keep on happening, but the community, the different people of different religions, they are united in India. They are living as brothers, and that's what the brotherhood, the unity, the peace of the country is supreme. That's what these religious leaders have now said after they've come here to meet the Prime Minister. And Christine, this is not the first time when such kind of a meeting has happened between the Prime Minister and the religious leaders of different communities. He's been meeting these leaders, and both ways the communication happens. He also listens to these community leaders. He looks after the concerns of different communities. And also these meetings, they are clearly showing that the politicians are just focusing on their kind of interest, but the community is understanding what kind of progress India is making together with all the communities, all the religions and all the faiths which are living in the society, in the community. So this meeting has been very crucial, and on the day when the Prime Minister has to address the House, it's all the more important. Absolutely. We heard Dr. Imam Umair Ahmad Ilyasi just say पैगाम मोहब्बत है, पैगाम देश है. Let's quickly play out that reaction after representatives of different faiths interacted with the Prime Minister. Here's what they said. Let's quickly play that out once again. All right, before that, let me quickly take in a word from Mr. Dushant Sridhar joining us on the phone line. Mr. Sridhar, what would you say? Because, often we see, and especially from the opposition, time and again say how the Modi government is only interested in Hindutva. They want to ensure that this is a Hindu Rashtra at the end of the day. And here's, a group of representatives, mostly from minority communities, interacting with the Prime Minister and sending out a larger-than-life message. They really don't believe in what several have said and on how minorities continue to live under threat in the country. Yeah. Namaskaram to all your viewers. This is a very positive step, and just not for optics, but the truth also remains that just not for the last 10 years, 50 years, 70 years, in the last 1,500 years, we have had a variety of religions. If I go back even 2,500 years, we have had a plethora of religions, right from Buddhism, Jainism,
Sikhism, and we've had Western religions as well, like Judaism, Christianity, and Islam, and many smaller communities, even the Parsi communities and the Jews, who have been living and they've had their places of worship. So when the nation was divided on basis of the religion, yes, the other part did become an Islamic country, but we still chose to be a country that will accommodate all religions. The word secular was introduced only in the 1970s. What were we before 1970? We were still secular by heart. We are still people who respect all religions. And this meeting up of the Honorable Prime Minister with the leaders of the minority, I also feel that just not in the religious sphere, we have had people from the minority communities, from their religions, in all spheres of life. A lot of the heroes whom the youngsters venerate in the Bollywood may not even belong to the Hindu community. So we have accepted them. We have had people from all religious communities reaching to the posts of Chief Justice of India, being top-level advocates, people who are leading from various industrialists, philanthropists, and so on and so forth. So, and one more point that I would like to mention is, when there are schemes of the government which includes the infrastructure, construction of roads, ensuring that the food grains reach people on time, be the yojanas where there is health insurance given. I don't think at any point in time any central or state government would want to do it on basis of community. Every community is benefiting from educational scholarship, and as per the data, there is a large section of the Muslim community that is benefiting from the scholarship given in education. So which is the right step. So I honestly feel the central government is being very impartial, disinterested by stating that we are not concerned about to which community you belong. The benefits should go to all. And the meeting up of the Honorable Prime Minister with the leaders of the minority communities just exemplifies it, which is a beautiful message to the world that when people are fighting on basis of religion, here is an old civilization that respects all religions, and people from all religions can thrive with absolute harmony. Absolutely. Many thanks, Mr. Dushyant Sridhar, for putting it out so beautifully and really putting that perspective out there for our viewers. That's the latest coming in from the Parliament, the Prime Minister's interaction with leaders from several faiths, several minority communities and representatives of the same. Another reaction coming in from Umair Ahmad Ilyasi, Chief of All India Imam Organization. He's also given an exclusive reaction to Times Now. Let's quickly play that out. उमेर जी, क्या पैगाम आप यहाँ से देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री से क्या बातचीत रही आपकी? देखिए, हमारा जो आज का जो पैगाम था सभी धर्म गुरुओं का था, और सभी धर्म गुरुओं ने एक ही पैगाम दिया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस बदलते भारत की ये तस्वीर है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है, और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है, यही पैगाम दिया गया। आज सारे नए संसद भवन में तमाम सारे धर्मों के धर्मगुरु एक साथ होकर सब ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात की है, और सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत खुशी का इजहार किया। सबने आशीर्वाद भी दिया, सबने उनके लिए दुआएं भी करी। उन्होंने भी खुशी का सबका एक इजहार किया कि आज नए संसद भवन में तमाम सारे धर्मगुरु आज यहाँ एक साथ हैं। यही पैगाम है भारत का और भारतीयता का, हमें इसे आम करने की ज़रूरत है। इलियासी जी, गोविंद देव गिरी जी हैं जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के ट्रेजरार हैं ट्रस्ट के, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की 3 आस्था की जगह है। मुसलमान भाई अगर हमारा दर्द समझें तो वो एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करें। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने जिस कैसे बात कही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी मसले का हल संवाद है, डायलॉग है। अगर हम बैठकर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और बातचीत करके कोई मसले का हल निकलता है तो इससे अच्छा कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि आज का ये भारत है श्रेष्ठ भारत, आज का बदलता भारत, नवीन भारत। इस बदलते भारत की ये तस्वीर थी जो आज संसद भवन में थी। तो मेरा कहना है कि ये मुद्दे जो हैं मंदिर के और मस्जिद के हैं, तो इस मंदिर के मस्जिद के मुद्दे के लिए पुजारियों को और इमामों को बैठकर इस पर संवाद करना चाहिए, क्योंकि इमामों के
और पुजारियों के माध्यम में आपस में मिलकर डायलॉग होगा, तभी इस मसले का हल निकलेगा। क्योंकि ये मसला राजनीति अगर हो गया तो मसले का हल नहीं निकलता। इसके लिए इमामों को, पुजारियों को बैठना होगा, क्योंकि ये मसला मंदिर और मस्जिद का है, धर्म का विषय है, ये हमारा विषय है, हम मस्जिदों का विषय है, मंदिरों का विषय है। तो उसके लिए इमामों को और पुजारियों को एक होना होगा, एक साथ बैठकर बातचीत करनी होगी, डायलॉग को लेके जाना होगा। संवाद ही एक माध्यम है जिससे मसले का हल निकलता है। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि सारी मस्जिद हमसे छीन ली जाएंगी, मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए। लेकिन कोई क्या कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि आज हमें सबको मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करना है। संवाद के जरिए से किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच।